Hello everyone, this is Dr. Pooja Sharma and I welcome you all for this to study managing people, and in managing people today we will be studying about industrial relations. So obviously my first question to all of you is, what comes in your mind when you listen this word industrial relations? What are the factors which are making impact on industrial relations? What do you think, what are the various situations to be there so that the peaceful industrial relations can be maintained? So, to answer all these questions, obviously I am here, and again, the way we have covered our another 2 units, we always started with a case study and with a storyline. So, again, I'm going to start with a small story, but this story is not like the previous two stories. It is Sad Day and Saddest Incident. The title of the case is Sad Day and Saddest Incident. It was August 3, 1972, and a mob of 600 workers, led by an office bearer of the union, they entered in the general manager's chamber and dragged him out around 1:30 p.m., beat him back, beat him black and blue till the poor man died. 8 others, mainly supervisors, were seriously injured, and this all these all things were actually going for around half an hour. And by 2 p.m., actually police came and they opened the fire to stop the mob. And then what was the result? Lockout was being declared for 2 months. Yes, it was lockout for 2 months. And after 2 months, when lockout was lifted, the new wage agreement was being signed and highly in favor of the workers, and the work was resumed. But the enterprise did not regain its past glory. And it was sold out. It was sold to a Mumbai based group of companies, and finally they had wounded themselves up. The enterprise was, you must be knowing the name, DCM, है ना? It is Devanagari Cotton Textile, and the GM who was actually killed, his name was BP Shetty, and the negotiation went on for years with both the sides sticking to respective stands. BP Shetty was an expert in introducing productivity linked incentive schemes, and both were rejected by the union. A strike broke out and lasted for 4-5 days, and the union was brewing very much, and BP Shetty was the point man. So it was a very sad day for the particular industry. It was, I would say, irony that had actually happened, and BP Shetty was killed by Omkarappa, who was the supervisor on the shop floor, and he was on the shop floor and he has been displaced from the position, and was actually got suspended from the workplace, and ultimately police had to intervene. But the thing that was actually lost, not only a general manager, not only a progressive man, but also an organization itself, because lockouts for 2 months, not a small time. So here what we are going to talk in industrial relations. So क्या हमारे दिमाग में जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो स्ट्राइक, लॉकआउट और घेराव ही आते हैं, या इनके बियॉन्ड भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं. So let us begin with the background. Basically, relations between the master craftsman and his co-workers. यहाँ पे मैं आपसे चीज बोलना चाहूंगी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई के बीच का रिलेशन होता है, राइट? और ये जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच का रिलेशन होता है ये बहुत
ही नाजुक रिलेशनशिप होती है. एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर डीलिंग विद द ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, specifically when if there is no proper communication channel is existing, if union interference is at huge amount, or if union interference is even not allowed, what people think about the grievances, how the grievances is being handled. So there are n number of things which are falling under this category. So to understand the meaning of industrial relations, so it is clearly written on your screen that industrial relations describe the relationship between management and employees and their organizations that categorize or grow out of employment, right? So अगर हम बात करते हैं कि social relations in production, so that actually talks about industrial relations. कुछ और definitions जो है वो भी यहाँ पे incorporate की गई है कि all types of intra-group relations within the inter-group relations between these constituent groups, and it includes the individual relations and joint consultation between employers and workplace. At the place of work, collective relations between employers and their organization and the trade unions and the part played by the state in regulating these relations. So अभी ये जो J.H. Richardson की definition है वो ही हमें ये बताएगी कि कितनी टाइप की पार्टीज जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है. ठीक है. So industrial relations, they can be formal, they can be informal, and they can be mixed type of industrial relations. And when we are talking about formal relations, so established among individual and industry by the rules and regulation of the enterprise, and formal relations are functional and are determined by the hierarchical order. ठीक है. वैसे भी हम सबको ये चीज अच्छे तरीके से पता है. When people are getting the legitimate power, तो उनके जो followers होते हैं या उनके I would not say followers but जो subordinates होते हैं, they need to follow the instruction because the person is in power, and the power which he has gained, it has come through the legitimacy. Informal, personal and individualized relations among the member of the management and employers are called the informal relationship. Means this is called between two workers wala relation. Then mixed relation, neither formal nor informal, established between two persons in the course of performance of their professional duties, है ना. See, partly personal, partly functional, यानी mutual adjustment of relieving each other for tea breaks, है ना. It's a sense of belongingness, and it is about the mixed relationship. Before moving towards determinants of industrial relations, I would like to here incorporate a few things for you. That IR is basically concerned with the relationship between management and employees. That might be clear to all of you. And ये कौन-कौन से areas को cover करता है? So IR is actually covering, first thing, it is covering collective bargaining, right? It is actually covering the role of different parties, Machinery for resolution. When we are talking about machinery for resolution, means in case अगर किसी तरह का कोई भी dispute होता है तो उसको solve करने के लिए लेजिस्लेशन में क्या लिखा हुआ है और हमने किस टाइप के मैकेनिज्म्स बना रखे हैं कि उन सारे डिस्प्यूट्स को टाइमली सॉल्व किया जाए, राइट. सो दिस इज अबाउट मशीनरी फॉर रेजोल्यूशन. राइट. देन उसके बाद में व्हाट इज बीइंग रिटन इन द लॉ, तो लेबर लेजिस्लेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग, industrial relation training. Last but not the least, grievance and disciplinary policy. Grievance and disciplinary policy. ठीक है.
So these are certain things that is being covered in industrial relations, right? Let us proceed further. All right, were here. So what are the things that determine इंडस्ट्रियल रिलेशन? ऑब्वियसली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो कौन कौन से रिलेशंस होते हैं जो दो लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. नॉट नेसेसरी कि किसी तरह का जो डिस्प्यूट है वो हमेशा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में ही हो. एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज के बीच में भी डिस्प्यूट जो है वो हो सकता है. ठीक है, तो उन चीजों को रिजॉल्व करने की मशीनरीज जो है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एटीट्यूड्स, वी मस्ट नो व्हाट एटीट्यूड इज, है ना. तो एटीट्यूड को समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउ डू वी ऑल लुक अपॉन ऑब्जेक्ट, राइट. हम किसी भी चीज को किस तरीके से, किस नजरिए के साथ में देखते हैं, है ना. और हमारा जो एटीट्यूड फॉर्म होता है उसका अपना बैकग्राउंड होता है. दैट इज व्हाई एटीट्यूड ऑलवेज वर्क ऑन थ्री थिंग: अफेक्शन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन. तीन चीजों के ऊपर एटीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है, राइट. बहुत ज्यादा हम एटीट्यूड की कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं जाएंगे, बस हमें ये पता है कि इफ वी आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आई वोंट से दैट वी आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ पीपल आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड एम्प्लॉयर्स आर हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, है ना. अगर उनको ना सिर्फ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड इफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग to transform themselves and working selflessly, so it's going to give a peaceful environment to the organization. Then job satisfaction, what sort of inputs is being given by an employee and the kind of reward he or she has received फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों के बीच में अगर इक्वल टू का साइन एग्जिस्ट करता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो जॉब सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर बात किस बारे में करता है कि एनुअली हमारे यहाँ से ऑन एन एवरेज टोटल कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होते हैं, है ना. वो एक रेट को बताता है. यानी अगर हमारे यहाँ पे सपोज 1000 एम्प्लॉयज हैं और उन 1000 एम्प्लॉयज में से 20 एम्प्लॉयज जो हैं, 200 एम्प्लॉयज जो हैं, वो हर बार किसी न किसी रीजन की वजह से हमारे यहाँ पे 20 का सेपरेशन जो है वो रहता है. तो अगर हम इसको रेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अपने यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट के अंदर लेबर टर्नओवर है. तो दिस बिकम ए हाई टाइम कि इतने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं. क्या इसके पीछे कोई मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके पीछे जॉब डिससेटिस्फेक्शन का रीजन है, इसके पीछे एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, इसके पीछे इंटरपर्सनल रिलेशंस है, इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, क्या रीजंस हैं. ठीक है. देन उसके बाद में बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल एब्सेंटिज्म के बारे में. जितना ज्यादा एब्सेंटिज्म होगा उतना ज्यादा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो एक फर्म का लो हो जाएगा. सो अगेन इट बिकम्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. देन ऑब्वियसली स्ट्राइक एंड लॉकआउट तो है ही कि जितना ज्यादा इनका नंबर ज्यादा होता है उतना ही परेशानी जो है वो ओवरऑल फर्म की परफॉर्मेंस के ऊपर आती है. वर्कर्स पार्टिसिपेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स कि वो कितना अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग के अंदर. इफ दे आर एक्चुअली ट्रीटिंग देम एज लाइक कि सिर्फ सजेशन दीजिए, हम इससे ज्यादा आपका कहते हैं ना आप का रोल यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर वो इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं डिसीसिव रोल जो है वो होना चाहिए, तो वर्कर्स विल फील दैट वी हैव बीन वैल्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ग्रीवियंसेस, what is the grievance procedure over there.
एंड इन हाउ मच स्पैन ऑफ टाइम इट गेट रिजॉल्व, 7 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, 24 घंटे के अंदर फर्स्ट कंप्लेंट जो है वो फाइल हो जाती है. इफ दे आर लेस तो पीपल विल बी हैप्पी at the workplace, right? So these all are the determinants of industrial relations. ऑब्वियसली जब हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो बाय डिफॉल्ट थिंक है. फिर ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, आर वी अलाउइंग यूनियन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन और पीपल हैव जॉइंड दी टेकन द यूनियन मेंबरशिप, और किस टाइप के किस लेवल का जो ट्रेड यूनियन है जिसके साथ में आपकी मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज जो है वो एसोसिएटेड है. देन एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, वो भी बहुत मैटर करता है. आप लोगों को सबको एग्जाम्पल पता होगा कि टाटा मोटर्स को अपना नैनो का प्लांट जो है वो सिंगूर से बाय रोड शिफ्ट करना पड़ा था साणंद के अंदर, ठीक है. और उसके अंदर स्टेट भी एक बहुत बड़ा रीजन था. सोशल रीजंस जो है वो भी उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज थी. और ऑब्वियसली नैनो का जो प्रोजेक्ट था वो रतन टाटा का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट्स, एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लोगों को 4 व्हीलर जो है वो डिलीवर करवाना. तो आई थिंक मोर देन 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरे प्लांट ने बाय रोड जो है वो डिटरमाइन किया था. देन उसके बाद में बात होती है पब्लिक सर्विसेज की. तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अगर चेंज हो जाते हैं, लॉज एंड ऑर्डर्स जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेस एंड पॉलिसी के ऊपर चेंज हो जाते हैं, तो अगेन इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर एलिमेंट्री रोल प्ले करता ही है. सो इनफॉर्मल इन पर्सनल employer-employee relation changing to the more formal relations nowadays. Growth of formal institution like trade union, employer associations, growth of sciences of personal management, etc. They are also existing. And from private relationship to the relationship of public importance. That is how it actually has got emerged. डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन. वेयर कॉर्पोरेशन दैट पीपल आर स्माइलिंग, और जब कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पे क्या है, पर्सन इज एंग्री. What happens in the case of cooperation? You all can see in this picture. And what happens in the case of conflict? ठीक है. So cooperation is the normal feature of industrial relations. Modern industrial production is based upon cooperation between labor and capital. And capital जो है वो किसके लिए stand करता है? Capital stands for the owners of the business enterprises who supply the capital and are the owner of the organization. Labor, they basically standing who works in the factories, mines and other industrial establishment or the services. ठीक है. तो जितना ज्यादा कॉर्पोरेशन रहता है ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा एक हेल्दी एनवायरनमेंट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है. देन रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट डिसएग्रीमेंट इन वन पॉइंट ऑफ सिचुएशन. कॉन्फ्लिक्ट स्पीक्स अबाउट द disagreement at one point of time, and we cannot say that conflict is bad. It's not always bad. Disagreements are important, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स हैं इसका मतलब किसी ने कुछ सोचा है उस बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो हुई है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रोडक्टिविटी को रोकने की कोशिश करो या आप क्या ना टाइम किल करने की कोशिश करो. अननेसेसरी का डिस्कशन हो रहा है, दैट इज रॉन्ग. दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इन 2 parts. One is functional, the another one is the dysfunctional. Right? So when we are talking about functional, it gives you the positive outcome, it gives you the negative outcome. हम किसी conclusion पे पहुंच के कुछ constructive सोच पाते हैं तो वो functional conflict होता है, और वहीं जब distraction है so it is a dysfunctional sort of thing.
सो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट जो है वो क्या रहते हैं? एडवर्स, ऑब्वियसली एडवर्स ऑन प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंसी, क्वालिटी, ह्यूमन डिससेटिस्फैक्शन विल बी देयर, डिसिप्लिनरी प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है, एंड फाइनली द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव वे के अंदर आता है। देन उसके बाद में ऑब्वियसली थिंग्स विल बी निग्लेक्टेड, हायर कॉस्ट रिजल्ट इनटू हायर प्राइसेस टू द कंज्यूमर, फिर स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स जो है वो भी हो सकते हैं, हायर एम्प्लॉई एब्सेंटिज्म एज वेल एज द टर्नओवर. So these are certain major factors which are influencing the industrial relation. Obviously, institutional factors will be there, economic factors will be there, technological factors will be there. So industrial relations are influenced by so many factors, right? We are starting with the institutional factor. These factors basically talking about government policy, labor legislation, voluntary codes, collective agreements, employee codes, employers federation, social institution like community, caste, joint family, creed, system और beliefs. तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड है? इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है. देन हम जब इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें मतलब किस टाइप का आपका इकोनॉमी है ना, कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, मिक्स्ड है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ लेबर फोर्सेस, उनका डिमांड, उनका सप्लाई, उनका पर डे का वेज रेट, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे काफी सारे लोग जो है वो स्टेट वाइज माइग्रेट होते हैं स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स. क्यों? क्योंकि स्टेट वाइज हर जगह की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है. हो सकता है कि वेस्ट बंगाल जितना पर डे का वेज देता हो, गुजरात उससे 3 गुना ज्यादा पे करता है ना. सेम विद द बिहार, सेम विद द ओडिशा. सो हर एक जगह का वेज रेट अलग है, इस वजह से माइग्रेशन जो है वो भी स्टेट वाइज वेरी करता है. नहीं तो लोग सेम प्रोफेशन के अंदर या सेम, आई वुड नॉट से दैट्स अ प्रोफेशन इफ, बिकॉज इंडिया ओवरऑल इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, बट वी नीड टू सी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो कौन से स्टेट्स में ज्यादा हुआ है, इस वजह से उनका डिमांड कहाँ पे ज्यादा है और एज वेल एज पेमेंट जो है वो कहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर रखा गया है. ठीक है. देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये ऑब्वियसली किसके बारे में बात करता है? ये ऑटोमेशन के बारे में बात करता है, रैशनलाइजेशन के बारे में बात करता है एंड कंप्यूटराइजेशन के बारे में बात करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन. ऑब्वियसली टू एनहांस द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द वर्कर, अच्छी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर मेंटेन किए जाते हैं तो क्या होता है कि एक दे आई वुड से कि बोथ विल बी इन द गुड पोजीशंस, राइट, एंड मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट एंड द एक्सटेंट पॉसिबल दे अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. Allow workers to have a say in important decisions affecting their lives, resolve or knotty issues through consultation as well as negotiation, and to encourage and develop the trade unions in order to improve the workers' collective strength and pave the way for industrial democracy. So now one of the important things to understand that what are the key parties to IR, right? So here we can say there are 6 major key parties to industrial relation. I hope all of you can see on the screen. Let me zoom in this. Okay, yes, now it's pretty visible. And now we will discuss about parties to IR. So here first come, it is about the employers. Sorry, we are here about the employees. Obviously अगर employees नहीं हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे. सो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मिलियंस के अंदर अलग अलग टाइप के सेक्टर्स के अंदर लोग जो है वो काम कर रहे हैं. देयर आर अबाउट 28.1 मिलियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड 365.1 मिलियन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन अवर कंट्री. सो इट इज देयरफॉर यूजफुल टू मेक सर्टेन ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडियन वर्कर्स. So what are these observations? Commitment to the industry. First thing, labor is committed to the industrial setting, thus contributing to stable workforce. And true, the worker might have his or her, moorings in village, but it is unlikely that he or she would go back to his or her village. He or she is settled in the industrial city. His or her children are put in the schools in the city, and except himself or herself, no one else in his or her family has, nostalgic feeling to the village. So beside the present generation of young workers is mostly born and brought up in urban areas
areas and has accepted the industrial employment as a way of life. So first thing is about commitment to the industry. Second, it is about protective legislation. Yes, from time to time government has enacted a variety of labor acts, and they have also they have also run such type of campaigns where the awareness is being created about their rights. Then status of the workers. So the economic and social status of today's worker has vastly improved, and industrial employment is no longer an undesirable alternative left for those driven out from the rural areas, and now they are having the improved skills. They have increased their level of understanding in terms of industry, and the dynamic change in industrial sphere have, as a National Commission on Labor has observed and brought about the social amalgam. So this is a good sign that status of workers has actually improvised employment pattern. Another feature noticed in the industrial labor is the change that has come about the employment pattern owing to changes in industrial activity, which has tremendously expanded and diversified and has undergone a technical transformation. In the earlier days, unskilled work it's predominated in industrial employment so long as traditional industries like textile and mining were in the forefront. And the progress of expansion of diversification, new avenues of industrial enterprise in engineering, chemical, pharmaceutical, they have also come up. So now the employee perceive the industrial relation in terms of opportunity to improve their condition of employment. First thing, voice any grievances, exchange views and ideas with management, and share the decision making. Second important key party is trade union. So union have a crucial role to play. You all must be agree with this thing, and to redress the bargaining advantage for the employees. Obviously, the trade union plays a vital role to secure improved terms and condition of employment. Obviously, provide them the job security. It becomes one of the primary responsibility of the employer. But if trade union is there, when association is there, this thing actually increasing day by day, that a job should be secure, and unions play a vital role in that, and to improve to obtain improved status of workers, workers specifically in their own work, and to increase the extent to which union can exercise democratic control. So that is why इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ट्रेड यूनियन जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की पार्टीज की तरह रोल प्ले करती है. देन उसके बाद में हम नेक्स्ट की पार्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयर. यस, एम्प्लॉयर टू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी डिस्प्यूट बेसिकली, एंड ऑब्वियसली जो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो यही होता है कि दोनों के थॉट प्रोसेस के अंदर अगर गैप रहता है तो डिस्प्यूट जो है वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक प्लेस, डिस्प्यूट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस. एंड आई मीन if we are talking about industrial dispute, the industrial dispute is taking place between employer and employee. So employers are basically in that state, means I would say the management has the right to hire and fire any worker, right? And now withstanding union restriction, it is not just firing a worker here or there, but the management's ability to control the economic destiny of the workers that matters, because workers are earning their bread and butter from the particular organization, and management must not treat them like a factor of production. They are human being, and that human being thing supposed not to be ignored. So the management has the right to relocate, close, merge, take over, sell a particular plant, but these actions are making impact on the employees, that has to be taken care. Means कोई भी चीज हो उसमें वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए. एंड देन मैनेजमेंट हैज अनदर पावरफुल वेपन इंट्रोड्यूसिंग और थ्रेटनिंग टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज कैन डिस्प्लेस द लेबर skills. So that is again
In industrial relations, employers has been considered as one of the key parties, right? And management have deep pockets, and they employ several tactics to break a strike, right? Say for example, set one faction against others and gain loyalty of the employees. Here I would like to tell you one more example here. And this example, it's goodbye to strike and lockouts. So it's a goodbye to strike and an end to bitter negotiation at Alwar factory, and the name of the factory of Eicher tractors, and the employees union has given up its right to negotiate its wages voluntarily, and the management is now free to fix annual remuneration for workers. In return, workers can look forward to a fair treatment from the management. Workers' productivity, as was stated above, has gone up considerably. Not just productivity, the work culture has undergone to a metamorphosis, and the workers are highly motivated, and they who needed supervisors to meet targets do it without them. So there is a fair treatment, mutual trust, transparency, and open communication, and the environment of the workplace is so pleasant that the union leaders have to work to earn their salaries, so uncommon in the industries. So here one positive example which we have actually incorporated here, Eicher tractors come, and here we actually can note down certain things that in general employers tend to see employee relationship in terms of following activities. And what are these following activities? Creating and maintaining employee motivation, first thing. Second thing, obtaining commitment from the workforce. Third thing, establishing mutually beneficial channels, achieving high level of efficiency, sharing decision making with employees, engaging in a power structure with trade unions. So अगेन यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो खत्म होते हैं कि एम्प्लॉयर्स जो इन विच where they are actually playing a very dominant role, in which means employer were known, believed or perceived to be able to impose minimum terms on and conditions to employment, and in a worst case to reward top managers and directors at the expenses of main body itself. देन हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के बारे में. सो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जो है वो लोकल इंडस्ट्रियल लेवल एंड नेशनल लेवल के ऊपर दे आर एक्चुअली रनिंग, राइट. एंड जैसे हम बात करते हैं CII, तो वो एक पावरफुल बॉडी है नेशनल लेवल के ऊपर, एंड दे आर डूइंग द एडमायरेबल जॉब इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स ऑफ द industries, right? So representing employers in collective bargaining, developing machinery for avoidance of dispute, providing information on employee relations, and representing members on national issues. So the specific objectives of such type of organizations are identifying and strengthening industry role, right? Acting as a catalyst, reinforcing industry commitment to society, working towards globalization, and providing up-to-date information to the industry and promoting cooperation with the counterpart organization. ठीक है, तो एसकॉम है, फिर फिक्की है, फिर FASSI है, नेस्कॉम है, तो ये सारे के सारे जो है वो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है. सो हियर this point is being also covered. Now we are talking about role of government. In a sense, government intervention in industrial relation is as old as industry itself. So however, till the 19th century, governments everywhere followed laissez-faire policy. They left IR to the managers and workers who were required to solve the problems themselves. Towards the end of 19th century, the attitude of government changed and the intervention became reality, right? And the state, as of today, regulates the relationship between the management and the labor and seeks to protect the interest of both the groups. The government has set up wage boards and labor courts, tribunals, and enacted laws to lay down norms to enforce their compliances. So this is how the role of government is here. And then हम उसके बाद में बात करते हैं judiciary
के बारे में कि कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स जो है, सो द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स इज बीइंग इट्स देयर, देन जुडिशियल रिव्यू, द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट to rule the constitutionally of the legislation, and as well as means judiciary to settle the legal dispute referred to them that affect the industrial relation directly. So this is how key parties to IR are functioning. ठीक है, so today we actually have discussed about objectives of industrial relations. I'm sorry, we started with one side story. In between we have incorporated a good story also कि strikes and lockdowns जो है, lockouts जो है वो बंद हो गए, उसके बाद में productivity जो है वो increase हो गई. फिर हमने देखा कि industrial relations के objectives क्या रहते हैं, इसका nature किस तरीके का रहता है, और इनके categories जो है वो कितने type की होती है. फिर हमने उसके बाद में ये देखा कि what are the major key parties, फिर कि mixed type के relations भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं. जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें दो एस्पेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, एक कोऑपरेशन है और एक कॉन्फ्लिक्ट है. फिर हमने 6 मेजर की पार्टीज जो है वो आईआर की यहाँ पे देखी. कुछ बुक्स के अंदर आईएलओ को भी, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1999 के अंदर सेटअप किया गया था, जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के बारे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ लेबर के बारे में, के ऑब्जेक्टिव को लेकर के बात करता है, और उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं. एंड इसके बाद में हम यहाँ इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर हम डिफाइन ना भी करें तो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन हर एक उस जगह पे एग्जिस्ट करता है जहां पे एक पर्सन जो है वो एम्प्लॉयर के रोल में है और दूसरा एम्प्लॉइज के रोल के अंदर है. ऑब्वियसली हमने जब की पार्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे तो हम इस चीज को फील कर सकते हैं कि मोस्टली मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, दे एक्चुअली दे आर इन द मोर पावरफुल टाइप ऑफ रोल. वही कॉन्ट्रेरी जब हम डीसीएम का केस स्टडी देखते हैं तो उस कॉटन मिल की केस स्टडी में हमें ये दिखाई देता है कि व्हेन पीपल प्रोवोक तो इट माइट लीड टू अ ह्यूज लॉस. ठीक है, एक पूरा फॉर्म जो है वो बंद हो जाता है. तो अब इसके बाद में इसके कंटिन्यूएशन के अंदर इन द सेम सब्जेक्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रेड यूनियन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट. So students, stay tuned with me. Thank you so much for listening me. Hope you must have learned something new today, and take care. See you. Bye.